अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ। जनाब, आज की जो नशिस्त है वो है आपके सवालात और इमिग्रेशन कंसल्टेंट और एनालिस्ट जेन डो के जवाबात। तो जेन डो को उर्दू बोलनी नहीं आती है, तो मैं उन आपके सवालात जेन के सामने रखूँगा और वो आपको जवाबात इंग्लिश में ही देंगे। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती है तो फिर तो अप्लाई भी ना करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बात यह है, अगर आपको तमाम चीज़ें उर्दू में आप लिखेंगे और ईमेल में भी उर्दू स्टाइल में ही लिखेंगे या उर्दू में लिखेंगे तो फिर तो मसला हो जाएगा। जैसा कि पहले भी किया जा चुका है कि आपको 10+2 मतलब आप 12 जमातें पास होना चाहिए और आपके पास बहुत सारे केसेस में आइल्स भी होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर इंग्लिश आपको समझ में नहीं आ रही है तो फिर ज़रा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मसला कोई नहीं है, आप इंग्लिश सीख लीजिए, कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत सारे लोगों ने जो है वो इंग्लिश सीखी है और सीखने के बाद उसको पढ़ाया भी है और उससे बहुत पैसे भी कमाए हैं। तो जब आपके सवालात हैं जो मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ, जो आपने लिखे हैं, और उसके बाद जो है मैं जेन के सामने वो सवालात रख दूंगा। वन बाय वन मैं नहीं पूछूंगा, सारे सवालात मैं उनको एक साथ में दे दूंगा और वो उसके जवाब देंगी और मैं आपके सामने उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं रख दूंगा और आपको फिर इंशाअल्लाह ताला वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद भी, प्रोग्राम के बाद भी आपके सवालात हों तो बराए मेहरबानी मुझे ईमेल करें, लेकिन तरीके से ईमेल करें, अच्छे तरीके से, ताकि चीज़ें क्लियर हों। इंग्लिश में ईमेल करें, अच्छी इंग्लिश में ईमेल करें। चलिए, आपको बहुत अच्छी इंग्लिश में नहीं आती तो कम से कम सिंपल इंग्लिश में करें। उर्दू में और टूटे फूटे जो हैं वो ना करें उस तरह से, क्योंकि मुझे उसको रीअरेंज करने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी तरफ से वो तमाम चीज़ें बेहतर तरीके से आ जाएंगी तो मुझे इतनी मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो आपके सवालात मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर वो तमाम सवालात जो हैं रख देंगे जी इनके सामने। तो जनाब, एक सवाल लिखा गया है कि मैं 36 साल का हूँ, शादीशुदा हूँ, 5 फैमिली मेम्बर्स हैं, हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे, और 3 बच्चे हैं। अप्लाई किया था टूरिस्ट वीज़े के लिए, रिफ्यूज़ हो गया, लेकिन कनाडा आना चाहते हैं। उनकी एजुकेशन 10+2 यानी 12 है और स्पाउस की एजुकेशन जो है वो मास्टर्स हैं, और उनका सेल्स का 12 साल का एक्सपीरियंस है। और वो जानना चाहते हैं कि कोई परमानेंट रेजिडेंस का पैथवे यानी पीआर रेजिडेंस या पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंस का कोई पैथवे तरीक़ाकार है कि नहीं। अब जिन्होंने सवाल पूछा है वो ये सुनेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये उनका सवाल है। अच्छा, मैंने कहा था कि एक सवाल पूछिएगा तरीके से, बेहतर तरीके से। तो एक ने 5 सवालात लिखे हैं, क्योंकि पहली बार है इसलिए उनके पाँचों के 5 सवाल जो है मैं लेता हूँ और मैं जिन के सामने रखूँगा। मैं देखूँगा वो कितने जवाब देना चाहती हैं, नहीं देना चाहती हैं, उनकी समझ में आता है कि नहीं। कि पहला सवाल वो पूछते हैं कि जनाब, हाउ मच मनी इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर इमिग्रेशन टू कैनेडा। मत आप ये जानना चाहते हैं कि कितने पैसे चाहिए, एक्सपेंसेस कितने होने चाहिए, उनका कितना ख्याल रखा जाए कि उनके पास 5 लोग हैं, हस्बैंड एंड वाइफ एंड 3 किड्स। इमिग्रेशन कनाडा के जो है अगर अप्लाई करते हैं, प्रोसेस का टाइम कितना लेता है, और वो कहते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट्स की। और उसके बाद वो सवाल उनका चौथा है कि कितने पैसे चार्ज करेंगे वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट। अच्छा, कोई ऐसा है कि उनके सवाल है नंबर 5। मैंने कहा ना कि इतने कंफ्यूजिंग अंदाज में लिखा गया है कि उसको मुझे रीअरेंज करने में मुश्किल होता है। कि अब उसी में उनका सवाल नंबर 5 है कि क्या उनकी कोई हेल्प कर सकता है जॉब ढूंढने में और घर को ढूंढने में, और उसके चार्जेस क्या होंगे। उसके बाद उन्होंने कहा, जी आखिरी में ये पूछना चाहते हैं कि मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, आप मुझे बताएं कि पूरे एक्सप्लेन करें कि पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि किसी के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करना अमाउंट के हवाले से बहुत मुश्किल काम है। आप यकीन करें, जिन्होंने भी सवाल लिख के मुझे भेजा है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन क्योंकि पहली बार है, मैं मिसाल के तौर पे तमाम चीज़ें रखना चाह रहा हूँ दूसरे जो ऑडियंस है, ताकि उनको भी समझ में आए कि इस तरह से नहीं लिखना है। आपने 1 डेढ़ 2 जुमले के अंदर, जैसे कि पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था, बराए मेहरबानी वो इस तरह से मुझे लिख दें ताकि मैं उसको समझा सकूं। ठीक है जी, मैं आपके सवालात उनके, अब इनको मुझे कंपाइल करना है, उसके बाद उसके चेन के सामने जो है वो मुझे ये सवालात रखने हैं। तो ये सवालात के जवाबात जेन देती हैं किस तरह से, हम देखते हैं। इसके अलावा कुछ सवालात मैंने उनके सामने रखे हैं, जो कि 5 सवालात हैं। मैंने ये सवाल रखा कि पहला सवाल जो मैंने रखा है आपके हवाले से या आपके बिहाफ़े के
व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द इमिग्रेशन टू कनाडा फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से इमिग्रेशन करने के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं जेन। और दूसरा है कि what are the difference what are the different Canadian immigration programs available to पाकिस्तानी सिटीजन के लिए कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं। और उसके बाद तीसरा सवाल मैंने रखा है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू इमिग्रेट टू कनाडा फ्रॉम पाकिस्तान से माइग्रेशन अगर करना चाहे कोई शख्स के कितना रफली ऑन एवरेज टाइम लग जाता है। चौथा सवाल मैंने उनसे पूछा है कि व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज लाइक इन कनाडा फॉर पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स के लिए जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हो सकती हैं। और आखिरी सवाल मैंने रखा है आपके बिहाफ पर, व्हाट सपोर्ट सर्विसेज आर अवेलेबल फॉर टू पाकिस्तानीज़ और पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स इन कनाडा, कि कनाडा के अंदर जो सपोर्ट सर्विसेज हैं पाकिस्तान जो इमिग्रेंट आते हैं या पाकिस्तान से आते हैं उनको क्या क्या सहूलियात दी जा सकती हैं। तो जनाब मैं ये सवाल उनके सामने रखता हूँ। जेन, इज़ ओवर टू यू। First, I like to thank you, Siddiqui, for having me. I like to say Assalamu alaikum to all. The first question that I have is, and somebody asked that. I am 36 years old, married, 5 family members, husband, wife and 3 kids under 7 years old. Applied tourist visa but refused. Want to migrate. My education is 10+2, spouse education is master's in education. My sales job experience is 12 years. Any PR pathway? My response: yes, there may be a permanent residency, PR, pathway available for you and your family to immigrate to Canada. Here are some potential options based on the information you provided. Federal Skilled Worker Program FSWP. The FSWP is a points-based immigration program that assesses applicants based on factors such as age, education, work experience, language proficiency, and adaptability. With 12 years of sales job experience, you may be eligible to apply for the FSWP. However, your education level of 10+2 may not be sufficient to meet the minimum requirements, as applicants are typically required to have a post-secondary diploma or degree. Provincial Nominee Program (PNP). Many Canadian provinces and territories have their own immigration programs, known as PNPs. These programs are designed to address specific labor market needs and attract immigrants with the skills and experience needed in those regions. Some PNPs require applicants to have a job offer in the province, while others do not. With your sales job experience, you may be eligible to apply for certain PNPs. Canadian Experience Class (CC). The CC is a federal immigration program that is designed for individuals who have already worked in Canada for at least 1 year in a skilled, professional, or technical role. If you are able to obtain a work permit and work in Canada for at least a year, you may be eligible to apply for the CC. It is important to note that immigration requirements and options can change frequently, and it is recommended that you consult with a licensed immigration lawyer or consultant for more detailed information and guidance. Now, here are 5 to 6 questions together, and I will try my best to accommodate all. When I say Q1 or Q2, that means question 1 and question 2, and A1 or A2 means answer of question 1 or answer of question 2. Let's see. Q1, how much money is required for immigration to Canada? Expense of 5 persons, 2 husband, wife, and 3 kids under the age of 14. Q2, how much time this process will take? Q3, what are the requirements of documents for immigration and also which documents will help us in Canada? Q4, how much you charge from us if we come to you for whole process? Q5, is there anyone who can help us in finding job and house? If yes, then how much they charge? And last but not least, trust. I don't know how to explain this point. It's difficult to trust someone for huge amount of immigration. A1, the cost of immigrating to Canada can vary depending on the immigration program you apply for and the size of your family. In addition to the cost of the application process, you will also need to consider expenses such as travel, housing, and living expenses. It is recommended that you consult with a licensed immigration lawyer or consultant to get a more accurate estimate of the costs involved.
2. The time it takes to immigrate to Canada can vary depending on the immigration program you apply for and the number of applications being processed at the time. Generally, the process can take several months to a year or more to complete. 3. The requirements for immigration documents can vary depending on the immigration program you apply for. Generally, you will need to provide documents such as passports, birth certificates, marriage certificates, educational diplomas and transcripts, work experience letters, language test results, police clearance certificates, and proof of funds. It is important to ensure that all documents are properly authenticated and translated if necessary. 4. For sure, a licensed immigration lawyers or consultants may charge fees for their services, which can vary depending on the services provided. 5. There are many organizations and resources in Canada that can help newcomers find jobs and housing. Some of these services may be free, while others may charge a fee. It is recommended that you research these services and organizations to find the one that best suits your needs and budget. Regarding trust, it is important to do your own research and ensure that you are working with a licensed and reputable immigration lawyer or consultant. You can check their credentials with the regulatory body in your province or territory and read reviews and testimonials from previous clients. It is also recommended that you ask for a clear breakdown of fees and services upfront and get everything in writing to avoid misunderstandings later on. Siddiqui, there are many questions that someone who is considering immigrating to Canada from Pakistan might have. Here are some of the most common questions and their answers that you asked. What are the requirements for immigrating to Canada from Pakistan? Answer: to immigrate to Canada from Pakistan, you will need to meet the eligibility criteria for one of the many Canadian immigration programs. This may include having a certain level of education, work experience, language proficiency, and other factors. What are the different Canadian immigration programs available to Pakistani citizens? Answer: some of the Canadian immigration programs available to Pakistani citizens include the Express Entry System, the Provincial Nominee Program, the Rural and Northern Immigration Pilot, and the Atlantic Immigration Pilot. How long does it take to immigrate to Canada from Pakistan? Answer: the length of time it takes to immigrate to Canada from Pakistan can vary depending on the specific immigration program you are applying for, as well as other factors such as the number of applications being processed at the time. Generally, it can take several months to a year or more to complete the immigration process. What are the job opportunities like in Canada for Pakistani immigrants? Answer: Canada offers many job opportunities for immigrants, including those with skills and experience in fields such as healthcare, engineering, information technology, and many others. However, it is important to note that the job market can vary depending on the region and industry. What support services are available to Pakistani immigrants in Canada? Answer: Canada offers a range of support services to immigrants from Pakistan, including language training, settlement services, and employment services. These services can help newcomers to adjust to life in Canada and find employment opportunities. That is it, I think. And again, thanks very much for having me at your excellent channel. I would suggest all who are listening and taking benefit of these marvelous information must subscribe and like this channel. Jen, thank you very much. Thank you very much for coming in and giving us your recommendations and everything, and helping us to understand that the concerns that we have, the questions that we have. Thank you very much once again. We may ask you to come in to the program once again in the future to give us some recommendations, suggestions. Thank you very much. तो जनाब ये थी जेन, ये है इमिग्रेशन कंसल्टेंट भी हैं और ये इमिग्रेशन एनालिस्ट भी है। एनालिस्ट ज़्यादा मैं इनको कहूँगा कि ये इनके एनालिसिस जो है बड़े कामयाब जो है साबित होते हैं, और बहुत सारे सवालात के जवाबात वो जो बहुत सारी जगहों से नहीं मिल पाते हैं इनके पास आसानी से मौजूद होते हैं। इनके प्रैक्टिस बहुत पुरानी है। तो जनाब ये तमाम चीज़ें आपके सामने रख दी गई हैं। नेक्स्ट टाइम भी आप ईमेल ज़रूर कीजिए। वंस इन अ वीक मेरा इरादा है कि इनसे बात करके हम तमाम इंफॉर्मेशन आपको इंशाअल्लाह ताला देंगे। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला की दूसरी वीडियो में। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, शिफा दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान दे, हिदायत दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।